So no plans to open, wanted to see how 1 hour closed and then decide a good shorting opportunity in at looking at the 1 hour close. And also, if you watched my video yesterday, I gave a good buying opportunity yesterday, and the same levels gave a good selling opportunity today. So yesterday's first 3 minute closed above 280. Today it closed below, and the same rule which I applied yesterday, when it comes and retests, you can keep this high as a stop loss and sell. Target will be a new low. So I didn't really take this trade. I was doing Nifty. So again, and at the end gave a buy system trade which predicted Vwap break and almost came to spot, actually almost closed above 600. Good trade, good day. For tomorrow, I don't really know. I like the closing in both Nifty and Bank Nifty for buying, but have to see how this reacts tomorrow again, so we will wait and watch. Thank you. निफ्टी में प्लान ये था कि 1 आवर क्लोजिंग देखेंगे, फिर ट्रेड करेंगे. 1 आवर क्लोजिंग 600 लेवल्स के नीचे हुई तो शॉर्ट लिया मैंने. बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो कल मैंने एक बाई ट्रेड दिया था जिसमें 280 लेवल्स इंपॉर्टेंट है करके बताया था. क्यों है वो भी बताया था. और 3 मिनट्स अगर कैंडल क्लोज हुआ है उसके ऊपर तो रीटेस्ट पे बाई किया था. सेम लॉजिक, 3 मिनट्स क्लोज हुआ है नीचे और रीटेस्ट पे सेल. निफ्टी मैंने सिस्टम ट्रेड दिया था, उसमें 215 पे बाय करने 215 के ऊपर बाय करने बोला था नियर डे लो 620 615 620 लेवल्स के आसपास. इसका लो था 624 और इसके ऊपर बाय करने बोला था स्टॉप लॉस डे लो और टारगेट वीवैप ब्रेक. कल मैं क्या करूँगा, क्लोजिंग अच्छी है दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में, पर देखते हैं. 1 आवर क्लोजिंग का वेट करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ बाय नहीं करना है. तो देखते हैं, मुझे अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो मैं वो करूँगा. थैंक यू.